Hello everyone, myself Deepak Gupta, logging again on this platform of College Dekho Learn on YouTube to continue our journey of macroeconomics via the chapter National Income. As you must have seen our first video on national income named National Income Part 1 on College Dekho Learn YouTube channel, we have understood the meaning of the word two-sector economy and how in a two-sector economy there is a movement of goods and services which can either be a real flow or a nominal flow and how that is used to determine the gross domestic product, that is GDP of a country, and the national income of a country. So to continue it further, today we will discuss the concept of the three sector economy and the concept of four sector economy. And now why we are doing this, why we are saying this? Because when we say that there is a two sector economy or a three sector economy, then it is a closed economy. Closed economy denotes that normally there is no interaction of one country with the outside world. Means, if we go by the concept of domestic territory, then this economy works in its own domestic territory and there is no interaction with the rest of the world. And if rest of the world also takes into part the circular flow of income, then we use the word four sector economy and the word is open economy. So some economies can be fully open, some economies can be fully closed, like China, we can say, and some like India can be a sort of mixed economy, which were earlier closed economies, but now they are in their journey to become an open economy. So that we presume that this opening of the economy will bring more funds into the country, and that will increase the productive power of the country and hence will contribute to the GDP of the country. So, what is the basic difference and how it operates? That when we discussed about the two sector economy, there was a concept of household, that is the consumer, and there was a concept of firm, that is the producer. And they were satisfying the needs of one another by one providing the consumption expenditure to the firm and the firm providing the factor incomes to the household. That was the nominal flow. But it can also happen that whenever there is a government, obviously there has to be a government in a country who will govern the overall administrative procedures in the country. So what that firm will do, that in addition to this mutual flow between the household and the firm, as discussed in our earlier session, the government will come into play by charging taxes from both the households and the firm. So simply speaking, the firm will pay indirect taxes to the government and the household will pay the direct taxes to the government. So we don't want to name them because firm will also give the direct taxes. So the focus only is that both the households and the firm will be giving taxes to the government, and those taxes as collected by the government will be used for the administration of the whole country and the upliftment of the poor and the needy. So what the government will do, that those of the household which need support of the government will be given payments like subsidies, like scholarship. So we use the word that such payments are given to a person though they have not contributed anything for the production of the goods or the services. So we call such payments as the transfer payments. We will further discuss this in detail, but for the moment you should understand that as per the last session, we use the word of factor payments or factor incomes, which primarily denoted rent, wages, interest, and the profit, because they were known as factor payments because they contributed primarily or they were paid for the goods or the services. So, primarily speaking, if the payment is made by someone to someone else for the direct or indirect use in the production of goods and services in the form of rent, wages, interest, and profit, then such payments are known as the factor payments. And in addition to all such payments, there will be payments which have been made
without any contribution to the goods and the services, without any use in the production of the goods and services, such payments will be known as transfer payments. And for example, subsidies, scholarships, allowances, etc. And important thing is that whenever we will calculate the national income, only the factor payments will be counted. Only the factor payments are included. This is very crucial part, that it only, whether it's a national income, whether it's a domestic income, it includes only factor payments. So no transfer payments are included. So in the coming session, we will discuss some examples where we have to classify, identify between transfer payments and factor payments, and that identification is important to underline the fact that we should not include any transfer payment in the calculation of our GDP, domestic product, and the national product. So what the government is doing, that government is using these taxes to give subsidies and scholarship etc. in the form of transfer payments to the household, and also supporting various firms in the form of grants. So those industries who need government support, and those industries are crucial for the growth of a, or we should say the balanced growth of an economy. So government wants to support them through various measures, and that one of the measures can be in the form of grant, and that is why they are also a kind of transfer payments. In addition, the household may be providing the factor of production to the government, because government will need, for example, human efforts. So household will go and work with the government. So household, like they have been providing the factors of production to the firm, they will also provide the factors of production to the government, and hence government will give not just the transfer payments but the factor payments also to the household. Similarly, the goods produced by the firm will not just be produced by the household, they will also be used by the government, because government will need various of these products. For example, stationery है, तो गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज को देने के लिए, कंट्री मैनेज करने के लिए, they will need the stationery obviously. So firm will be providing goods and services not just to the household but also to the government. So when they provide these goods and services to the government, then obviously the payment is made by the government to the firm in the case of consumption expenditure. So in a way, government is acting as a household to the firm and as a firm to the household, and also this position is ambiguous in the sense that sometimes the government starts acting like a firm and they start producing goods, and hence household buys the goods from the government. And similarly, the government may own certain factors of production like the household, and therefore they will be providing these factors of production to the firm, acting as a household for the firm. So government will play the multiple role, and hence the three sector economy is with government is a crucial part. So in this three sector economy, the household, the government, and the firm will play, and there will be a inter movement of various factor services and transfer payments. So in addition, we should say that in a two sector economy there was only a concept of factor payment, but whenever we come to a three sector economy there is always a concept of factor payment as well as the transfer payment. So now moving further, I think this much you should have anticipated till now, that in a closed sector or three sector economy, all the needs of all, whether it's a firm or whether it's a household, they are fulfilled by each other. That is, we are seem to be independent, we are seem to be Atmanirbhar, and we don't need anything from any other economy. And that may not be the case always. So it can always happen that in addition to the household, in addition to the firm, in addition to the government, they in together to in total among themselves
may not be able to consume all the goods produced, or they may not have all the factors of production, and hence they will need the support of the rest of the world. So if we are open to the rest of the world in primarily two ways, that if something is short in our economy, then we are ready to get it from the rest of the world through the procedure of imports. And if something is short in the rest of the world and you have them, and also to match the value of these imports so that there is no payment crunch, you provide goods to these rest of the world in the form of exports. So why I have put all these three in a box? Because it can be from any of them. Government may import certain things and government may provide certain value, certain goods to the outside the world. It means ये तीनों के तीनों जो पिलर्स है क्लोज्ड इकोनॉमी के, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ दोनों तरीके से इंपोर्ट करने में भी और एक्सपोर्ट करने में भी पार्ट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि किसी कंट्री में कोई फेमिन आया, कोई ड्रॉट आया, कोई वॉर रिलेटेड कैटास्ट्रोफे हुआ, तो वहाँ के सफरर्स को आप कुछ एड्स दे सकते हैं। तो आवर इकोनॉमी कैन मेक ट्रांसफर पेमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अनदर एग्जाम्पल कैन बी दैट सम स्टूडेंट्स ऑफ आर्स, they have been studying in foreign world, or in a international agreement, our government, our firms, our country's foundations provide educational assistance to the students of certain poor countries. So we may have been making scholarships payment to outside world. That is why there can be transfer payments moving out of the domestic territory to the rest of the world, and it can happen vice versa also, that there can be aids, there can be grants, there can be scholarships coming from the rest of the world towards our country. So there can be so many flows, but the crucial thing is that it will also involve not just the factor payments, but it will also involve, along with factor payments, the transfer payments. That is the first thing. And the second thing can be that because there are imports and there are exports, so we will always try to match them. And as we try to match them, and if they are not done, then there will always be a concept of balance of payments. So if there are huge imports with little of exports, then we also use the word, in some cases there is a difference between balance of payment and balance of trade, and how is that to be discussed, that is a separate part of our macroeconomic journey. But the point here is that we have to match these imports and exports so that our balance of trade and balance of payment are in control. And if that goes out of the position, that is imports are very much higher in comparison to the exports, तो होगा क्या कि आपकी कंट्री में कैटास्ट्रोफी हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। और अगर आप नोटिस करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आज की डेट में श्रीलंका एक प्रॉपर एग्जांपल है जहाँ पर ह्यूज इंपोर्ट्स को मैच करने के लिए एक्सपोर्ट्स है ही नहीं, एंड देयरफॉर देयर आर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट क्राइटेरियंस एंड द कंट्री इज गोइंग इनटू बैंकरप्सी. So we have to keep in control these kind of things when we talk about a fourth sector economy. But keeping all this in mind, we will discuss primarily with our mindset of two sector economy, because conceptually everything, whether it's a two sector, three sector, four sector, has to depend upon two things. One thing is consumption expenditure, and the other thing is factor payments or factor incomes, because in addition to them, all are transfer payments which will not be used for the calculation of national income or domestic income. And secondly, whether they are foreign words or the government, their character has to be as per the concept, either as a consumer or as a producer. So we can always grasp this whole funda
We can always grasp this whole funda from the basic point of view of two sector economy. So, as you will see from our last video, we have broadly understood the meaning of the word national income because it denoted the overall value of the goods or the services that have been produced by the residents of a domestic territory, whether inside the domestic territory of that country or from outside of the domestic territory. सिंपल भाषा में एक कंट्री के एक डोमेस्टिक टेरिटरी के रेजिडेंट्स ने कितने गुड्स और सर्विस क्रिएट करे उनकी वैल्यू इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो गुड्स और सर्विसेज का क्रिएशन उस डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ या उसके बाहर हुआ, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आपके इंडिया के रेजिडेंट्स कितनी गुड्स और सर्विस पैदा कर रहे हैं, वो आपकी नेशनल इनकम. एंड देन वी आल्सो डिस्कस द वर्ड डोमेस्टिक इनकम where we said that it is the value of the goods and services which have been produced in the domestic territory of the country, irrespective of the fact whether it is by the residents or the non-residents. यानी कि एक कंट्री में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री में कितने गुड्स और सर्विस पैदा हो गए, चाहे वो बनाने वाले रेजिडेंट्स हो या बनाने वाले नॉन रेजिडेंट्स हो. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनका फोकस जो था वो रेजिडेंट्स पे था और इनका फोकस जो था वो डोमेस्टिक टेरिटरी पे था, और इन दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस था दैट वाज नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच वाज इक्वल टू हाउ मच फैक्टर इनकम हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम अब्रॉड. तो इट वाज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड and it was net of how much factor income has been given from India to the outside world. So we use the word FITA, that is factor income to abroad. So it was from abroad, कितनी इंडिया में आई, कितनी चली गई. तो we should always be presuming that if we match it with here, that if ideally exports are more than imports, then we will presume that ideally NFIA will be positive and hence national income will be more than domestic income, because we said that the national income will be equal to domestic income plus NFIA. So before we move on to any other topic, we have to first clear this dilemma about what is resident and what is a domestic territory. So simply speaking, domestic territory क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री. ये जो वर्ड पॉलिटिकल बाउंड्री है इसका सिंपल भाषा में सेंस क्या है, जहाँ पर एक कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जिस लैंड मास पर, और नॉट जस्ट द लैंड मास बट द एयर अबव द लैंड मास and a sea boundary or sea limits up to a particular level of kilometers, normally which is 12 nautical miles from the last land mass. So that can be discussed in detail when we discuss the concept of customs or other geographical things. But political boundary, whether it's from air, whether it is on land, whether it is on wire, denotes the area on which the laws of a particular countries are applicable. तो अगर सी में मेरी पॉलिटिकल बाउंड्री है तो वहाँ मेरे रूल्स लगेंगे. किसी और कंट्री का बंदा अगर वहाँ कुछ क्राइम करेगा देन ही विल बी कमिटेड टू आवर कंट्रीज लॉ. एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ फ्यू इयर्स बैक सर्टेन इटालियन मरीन्स they killed certain Indian fishermen, and that was done inside the Indian political boundary, and hence they were reprimanded as per the Indian laws and they were arrested, irrespective of the fact that they were not Indians. But because the crime was committed inside Indian political boundary, for whatever reasons, they were tried as per the Indian law. So political boundary डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम स्पेशलाइज कर देते हैं कि भाई इन चीज़ों को आप प्लीज़ ध्यान रखिए क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है. और कुछ ऐसे स्पेशल आइटम्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये फर्स्ट लुक में लग सकता है कि पॉलिटिकल बाउंड्री में इंक्लूडेड है, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूडेड है, लेकिन ऐसा है नहीं. दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पॉलिटिकल बाउंड्री. सो first, what should be deemed to be included in our domestic territory? The first and foremost thing is that any, I should say, aeroplane
कोई भी हवा का जहाज, कोई भी वेसल, कोई भी लैंड का व्हीकल कन्वेंस, या कोई वाटर व्हीकल शिप, तो किसी भी तरह का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ऑपरेट हो रहा है दो अलग अलग कंट्री के बीच में, बट ऑपरेट कौन कर रहा है? रेजिडेंट, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी बिटवीन टू फॉरेन कंट्रीज। यानी कि सिंपल भाषा में इंडियन एयरलाइंस का, एयर इंडिया का, इंडिगो का कोई प्लेन शंघाई से न्यूयॉर्क जा रहा है, तो शंघाई चाइना में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है, उन दो कंट्रीज के बीच में जो प्लेन उड़ रहा है, लेकिन उस प्लेन को ऑपरेट कौन कर रहा है? इंडिगो एयरलाइंस या एयर इंडिया। तो क्योंकि उन दोनों एयरलाइंस का जो ओनर है वो रेजिडेंट है, तो वो जो प्लेन है वो हमेशा क्या कहलाएगा? इंडिया। दैट इज वाई अगर ऐसा कोई प्लेन क्रैश हो गया या कुछ भावनगर में परेशानी हुई तो वी यूज द वर्ड इंडियन प्लेन, इंडियन प्लेन, बिकॉज दैट इज डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री। इम्प्लीकेशन ये है कि उस प्लेन में फाइनेंशियल एंगल से जो भी गुड्स एंड सर्विस पैदा हुई वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में ऐड हो जाएगी, इसलिए वहाँ की जितनी भी टिकट्स की कलेक्शन है वो इंडिया की जीडीपी को बढ़ा रही है। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल, कि अगर उस प्लेन में किसी ने किसी के साथ कुछ बदतमीजी करी, कुछ और क्राइम हुआ, चाहे वो करने वाला फॉरेन कंट्री का सिटीजन क्यों ना हो, बट बिकॉज दैट विल बी डीम्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, सो ही विल बी रिप्रिमेंटेड एज पर द इंडियन लॉस। ठीक। सेकेंडली व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इज दैट there are international waters, and they are the waters which don't fall under the political boundary of any other country, and we all, as we all know कि जो sea है, they are just the resources, they are just the treasures of natural resources। तो वहाँ oil भी है, fishes भी हैं, और भी बहुत कुछ natural resources हैं। तो प्राइमरली सी की बोरिंग के लिए, सी के एक्सट्रैक्शन के लिए जो हमारी कंट्रीज की कंपनीज हैं वो रिग्स लगाते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं। तो अगर इंटरनेशनल वाटर्स पे हमारा कोई रिग है, हमारा कोई प्लेटफॉर्म है जो हमने वहाँ से ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए लगाया हुआ है, तो वो जो उतना एरिया प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल वाटर्स में, क्योंकि वो हमारे कंट्री ने पुटअप किया है, तो वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री में काउंट होगा। सो वी से सच प्लेटफॉर्म्स और रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर्स operated by residents of domestic territory, वो उसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक कंट्री की एम्बेसीज आर वी कैन से स्मॉल कंट्रीज। तो अगर इंडिया की एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया की एम्बेसी यूएस में है, तो एक तरीके से उस कंट्री ने उतना सा पार्ट हमें दे दिया। तो अगर इंडियन एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो उतना एरिया इंडिया का पार्ट है। वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी इंडियन गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं एंटर कर सकती। इसका मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। इसका मतलब ये है कि अगर उस पर्टिकुलर एरिया में किसी ने कुछ क्राइम भी किया, तो उसकी जो क्या कहते हैं इम्प्लीकेशंस है वो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे लॉ के हिसाब से चलेंगे, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो वी कैन से दैट एम्बेसीज सिचुएटेड इन अ फॉरेन कंट्री वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पार्ट होंगे। बट यहीं से एक दूसरी चीज निकल कर आती है कि दो आइटम हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो जो हमने लास्ट का आइटम किया है वो अपने आप में बन जाता है कि अगर हमारी एम्बेसी किसी और कंट्री में हमारी टेरिटरी में आएगी, तो वाइस वर्सा से हमने उस कंट्री को भी अपने यहाँ एरिया दिया हुआ है। तो उस फॉरेन कंट्री की जो एम्बेसी हमारे यहाँ है वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी में नहीं आएगी। सो वी कैन ऑलवेज से दैट द फॉरेन एम्बेसीज situated in a domestic territory, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन एम्बेसीज हैं वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। और इसके अलावा जितने ये यूएन के ऑफिसेज हैं, यूएन की बॉडीज़ हैं, जैसे कि WHO, जैसे कि यूनिसेफ,
इस तरह से बहुत सारी यूएन की बॉडीज हैं। वो जो यूएन की बॉडीज हैं उनके अलग अलग कंट्रीज में ऑफिसेज हैं। जैसे कि अगर मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ तो दिल्ली में आईटीओ के पास डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है। वो डब्ल्यूएचओ का जो ऑफिस है, वो जो पूरा कंपाउंड है, दैट इज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ यूएन। It means that particular area is not India. We cannot enter into that territory without the permission of the UN. It means that is not India. So such UN offices, so we have to analyze and note that all such UN offices situated anywhere in the world, they don't fall under the domestic territory of any country, and they will be only the UN. See? So keeping this in mind, we can always decide what is a domestic territory, and इस डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू प्रोडक्शन होगी, चाहे वो प्रोड्यूस करने वाला रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, दैट ऑल विल बी पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम। ओके, नाउ फॉर द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज द रेजिडेंट। तो प्लीज, रेजिडेंट के लिए दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। Citizenship is by birth. So it is absolutely different from citizenship. It can always happen कि कोई इंडियन सिटीजन है लेकिन इंडियन रेजिडेंट नहीं है, या वाइस वर्सा कोई इंडियन सिटीजन नहीं है बट इंडियन रेजिडेंट है, तो इट हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप। सेकेंडली, सिटीजनशिप इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। दिस रेजिडेंटशिप कैन बी फॉर इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशंस। तो कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती हैं लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती। तीसरी चीज है, इसकी डिपेंडेंसी या तो रेजिडेंस पे है, यानी कि आप कहाँ नॉर्मली रहते हो, या आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जहां से आप नॉर्मली इनकम जनरेट करते हो। तो जहां से आप रेगुलर बेसिस पर अपनी इनकम जनरेट करते हो, जहां पर आपने अपना बिजनेस या जॉब सेट कर रखी है परमानेंट, वो आप कंट्री आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और आप वहां के रेजिडेंट माने जाएंगे। तो अगर कोई इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री में परमानेंट जॉब कर रहा है तो ही शुड बी डीम्ड एज नॉन रेजिडेंट बट इंडियन सिटीजन, एंड वाइस वर्सा। जो फॉरेन नेशनल्स यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन बट दे आर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। And keeping this in mind, we have to remember that there will be certain people who on the first looks either resident but they are non-resident or vice versa. For example, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, बाउंड्रीज पे रहते हैं, अब उनके बिल्कुल बॉर्डर सीमा रेखा पे रह रहे हैं, तो उनका हो सकता है कि वो रहते पाकिस्तान में हो लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए किसी काम के लिए इंडिया में आ जाए, या रहते इंडिया की साइड है और वो काम के लिए वहाँ चले जाए। तो यहाँ जो डेफिनेशन है वो अपोजिट हो गई। उनका रेजिडेंस और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो अलग अलग कंट्री में काउंट होता है। तो वो उस केसेस में जो बॉर्डर रेजिडेंट्स हैं वहाँ हमारे लिए रेजिडेंस इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्डर रेजिडेंस के लिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज इम्पोर्टेंट। तो वहाँ पर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं और सब ये ध्यान रखते हैं कि वो किस कंट्री के अंदर रहते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली, जो लोग एम्बेसीज में जॉब कर रहे हैं या यूएन की बॉडीज में जॉब कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला कि रेजिडेंटशिप इज आल्सो फॉर द इंस्टीट्यूशंस। तो जितने भी यूएन के ऑफिसेज हैं, दे आर ऑलवेज नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो उस कंट्री के अंदर हैं ही नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं है। इसलिए वो खुद ऑफिसेज किसी भी हालत में इंडियन रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। बट उस फॉरेन एम्बेसीज में और उन तरह के यूएन ऑफिसेज में जो लोग जॉब कर रहे हैं, यानी कि इनमें जो लोग जॉब कर रहे हैं, पीपल वर्किंग है, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो लोग इस तरह की फॉरेन एम्बेसीज में, यूएन ऑफिसेज में इंडिया में जॉब कर रहे हैं, वो किस कंट्री के सिटीजन माने जाए। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो 1 साल का है, 1 ईयर। क्राइटेरिया इज 1 ईयर। अगर वो एक पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से कम रहेंगे तो वो अपने ओरिजिनल कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे। मतलब एक अमेरिकन इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी में जॉब कर रहा है, एक अमेरिकन
इंडिया में यूएन के ऑफिस में जॉब कर रहा है, या एक अमेरिकन इंडिया में डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में जॉब कर रहा है, और उसका जो पीरियड ऑफ सर्विस है वो लेस देन 1 ईयर है, then he will not be deemed as the resident of India, but he will be deemed as the resident of the original country. So he will be deemed as American resident. But if the stay is more than 1 year, यानी कि वही अमेरिकन अगर इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह लिया, तो वो सिटीजन तो हो सकता है अमेरिका का हो, बट क्योंकि उसका स्टे उस एम्बेसी में, उस यूएन ऑफिस में, इंडिया में मोर देन 1 ईयर हो गया, देन ही विल बी डीम्ड एज द रेजिडेंट ऑफ आवर टेरिटरी। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। वो कैसे कि जो इंडियंस हमारी एम्बेसीज में बाहर जॉब कर रहे हैं, वो अगर बाहर 1 साल से कम कम जॉब करेंगे तो वो रेजिडेंट इंडियंस कहलाएंगे, लेकिन अगर वो उसी एम्बेसी में मोर देन 1 ईयर रह लिए तो वो जिस कंट्री में एम्बेसी सिचुएटेड है उस कंट्री के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। सो विद these crucial points to remember, we close this session on this note that we have to identify who are residents and who are non-residents. So residents एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इंडिया लेके चलूँ तो इंडिया के रेजिडेंट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कितने भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू बनाए, that will be the value of total value of these goods and services will be deemed as the national income of our country. But if we ignore the concept of residentship and we pick with the concept of domestic territory, then as per the concept of domestic product or domestic income, इंडिया की टेरिटरी में जितने गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू है वो पूरी की पूरी जीडीपी है, और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड्स और सर्विस बनाने वाले इंडिया के रेजिडेंट हैं या इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। और ऑन द क्लोजिंग नोट, मैंने इस पूरी डिस्कशन में कहीं पर भी सिटीजनशिप को इग्नोर नहीं किया। सो आई होप दिस सेशन वाज ऑफ हेल्प टू यू एंड वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी फर्दर through our next session on national income, that is national income 3, in the coming week. Thank you very much. Goodbye.